हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर बच्चों, कम्युनिकेशन. आर यू पीपल रेडी टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर? लेट्स स्टार्ट. Dive in. Do you have internet broadband at your home? Or how it is an important means of communication? Let's take a lesson view what you are going to learn today. कम्युनिकेशन इन द पास्ट एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पहले जो कम्युनिकेशन के साधन थे हमारे पास पुराने ज़माने में, आप उनके बारे में पढ़ने जा रहे हो, और जो अभी आज के मॉडर्न टाइम में जो हम कम्युनिकेशन मीन्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में. लेट्स स्टार्ट. We want to remain in contact with our relatives and friends, and we want to send messages to them and also receive messages from them. The process of sending and receiving messages is called communication. जो आप लाइक उन्हें सपोज आप व्हाट्सएप करते हैं या फिर आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजते हैं या फिर आप ईमेल्स भेजते हैं, तो ये सारे मीन्स जो हैं ये कम्युनिकेशन मीन्स हैं, राइट? नेम एनी 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू वांट टू टॉक विथ योर रिलेटिव्स. ओके, ABC हम इन तीनों में मेंशन करेंगे. टू टॉक विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एट अ टाइम. ओके. कम्युनिकेशन इन द पास्ट. इन ओल्डन टाइम स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग वर नॉट नोन. जानते ही नहीं थे लोग कैसे लिखना है, पढ़ना है, या फिर सुनना कैसे है, बोलना कैसे है, इसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी. दे यूज्ड एक्शन, साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट. African tribes they used to drum beats that could be heard across the jungles to send messages. In many parts of the world, people lit a fire and by flapping a blanket over it sent smoke signals. ऐसे ऐसे पुराने लोग काम चलाते थे बेटा. अगर किसी को मैसेज भेजना है तो ड्रम बीट्स, ड्रम्स को बजाओ. अगर लाइक लोगों को बुलाना है तो स्मोक सिग्नल देते थे, फायर जला के ऊपर ब्लैंकेट को एकदम हिला के, फ्लैप करके, राइट? ये यूज़ करते थे. तो पहले के लोग भी कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कितने सारे मोड्स यूज़ किए थे. When people learn to write, they begin to use homing pigeons to carry the messages which were tied to their legs. पहले जो कबूतर होते थे उनकी टांग में एक पेपर पे लिख कर, जब उन्हें लिखना सीख लिया उन लोगों ने, तो उनकी टांग पर एक लाइक उनको टाई कर दिया जाता था, जो हमारे मैसेज होते थे जो हमने लिखा था, और उन्हें उड़ा दिया जाता था, तो वो उस पर्सन तक पहुंच जाते थे जहां हमें मैसेज भेजना होता था. तो दिस वाज कॉल्ड पिजन पोस्ट. Later messages were carried by men or on horseback, but all these methods were time consuming and were not reliable. अब जरूरी नहीं है हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच ही जाए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता था. Soldiers used to switch torches on and off to send messages through a language of dots and dashes known as Morse. Modern times of communication अब क्या है आपके? Today we have many modern and fast means of communication. We can communicate in different ways. We can send and receive messages through letters, telephone, fax and emails. These are the means of personal communication. Sometimes we want to contact a large number of people at a time. We can do it through radio, television, newspapers, etc. These are the means of mass communication. Postal system. A letter is popular means of communication. We can buy inland letters and postcards from a post office. We can write our messages on them. We can even write our message on plain paper and put it inside a stamped envelope. Our letters are carried by buses, trains, aeroplanes and even ships. They reach our friends and relatives in a few days. Urgent letters can be sent through speed post or by courier. These services take only 1 or 2 days to reach any city of our country. क्योंकि स्पीड पोस्ट मतलब जल्दी पहुंचना, राइट? अगर हम और कोरियर अगर हम भेजते हैं तो ये 1 या 2 दिन में हमारे जिन भी पर्सन को, हमारे रिलेटिव्स को या किसी और जगह पे अगर हम भेजना चाहते हैं अर्जेंटली, तो ये पहुंच जाते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. फैक्ट फाइल. An address has a 6-digit PIN code and it is used to deliver a letter to the correct address.
PIN stands for postal index number. Yes बच्चों, mark the full form of PIN. PIN code हम use करते हैं. The full form of PIN is postal index number. Now fax machine. This machine can be used to send written message and pictures immediately via the telephone line. Fax stand for facsimile. Telephone. The telephone is the fastest means of communication, and we can directly talk to our relatives and friends to the telephone who are in different cities and even in different another countries. So अगर आप दूसरी countries में आपके कोई भी relative रहता है तो आप उनसे कुछ ऐसा नहीं करना आपको कि आप कहीं पे कोई मैसेज दे रहे हो, टेलीफोन के थ्रू आप तुरंत कॉल मिला सकते हो और उनसे बात कर सकते हो. Nowadays, mobile phones are becoming very popular all over the country. They help us to talk a person anytime or anywhere. Through mobile phones, we can also send messages of words and pictures and even music or videos to other mobile phones. जैसा कि आप करते हैं शायद आजकल. Internet. This is the latest and the most advanced means of communication. We can talk or communicate with people anywhere in the world very quickly using the internet. We can send an email or electronic mail through the internet. For this, all you need is a computer and an internet connection. The internet is a network that links computers all over the world and using cables and telephone lines via satellites. Newspapers, magazines and books. Newspapers are sheets of printed papers that contain national as well as international news. It also includes advertisements and various features like fashion, entertainment, tourism, sports news, etc. Newspapers are available in different languages. हाँ जी बच्चों, ये different languages में print होते हैं ताकि जो भी जिसकी language है उसके according वो conveniently read कर सके. Magazines and books carry articles or stories through which we gain knowledge. Right? Radio. Radio is a form of mass communication across large distances, but these are one way. News is broadcast on the radio. People can listen to cricket commentary, advertisements, songs, etc. On the radio today, most of the people have a radio in their mobile phones and cars. ऐसा हम जब गाड़ी चलाते हैं तो लोग रेडियो सुनते हैं ना, उसमें मोबाइल फ़ोन्स में भी सुनते हो आप लोग. टेलीविजन्स. Television is also a form of mass communication. People watch cricket matches, news daily, soaps, cartoons and movies on television. Advertisements are shown on television. Many educational programs like quizzes are also shown on television. Right? Artificial satellites. Yes, bachcho. These satellites have made communication easier and faster. Satellites pick up television signals from one part of the world and send them to another part of the world. Through satellites, we are able to view live telecast of events happening all over the world. जैसे आपका क्रिकेट मैच वो तो कहीं भी होता है. Maybe it is happening in Australia और अमेरिका, किसी भी कंट्री में होता है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो उस मैच को. आप सपोज आप दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली में बैठे हुए भी आप उस मैच को देख सकते हो. राइट? तो वो कैसे होता है बच्चों? वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है ना. सो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव ब्रॉट अस ऑल क्लोजर. हमें एक दूसरे को बहुत क्लोज कर दिया है इन सारे मीन्स ऑफ जो भी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे हम बहुत नज़दीक आ गए. देखो ना, कहीं किसी और कंट्री में बैठे हुए भी हमारे रिलेटिव से हम कितनी ईजिली बात कर पाते हैं. राइट? ओके. ग्लोसरी. Communication to send or receive a message. PIN code is postal code of an area. Fax machine, a machine used to send a copy of a letter using telephone lines. Internet, a network of computers that are interconnected. Artificial satellites, an artificial body that moves around a planet. Quick recall. The process of sending and receiving messages is called communication. In olden times, people lit a fire by flapping a blanket over it, sent smoke signals. We can send and receive messages through letters, telephone, fax and emails. A letter is a popular means of communication. Urgent letters can be sent through speed post or by courier. The telephone is the fastest means of communication.
is the largest and the most advanced means of communication. Television is also a form of mass communication. Practice time. As usual, put the tick mark on correct option. Which of these is a means of mass communication? Bolo. Fax. Okay. Telephone. Okay. Newspaper. Okay. Fine. So, likewise you have to do all. Fill in the blanks. You have to write, you have to check the statements in the chapter. You have to read the statement correctly. I mean thoroughly. Like urgent letters can be sent through. आपने पढ़ा है? Speed post or courier. Very good. So, you can write here speed post. Fine. So, likewise you have to do all. And in the C part, write T for true statement, F for false statement. How you will come to know statement is true or false? Yes बच्चा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन चैप्टर में गेन की है, अगर आपको लगता है सेंटेंस गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, आप उसको टी लिखिए, अदरवाइज राइट एफ फॉर फॉल्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे, रीड करेंगे, इनके आंसर्स को अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे. लाइक कम्युनिकेशन क्या है, आपको इसका आंसर्स लिखना है. आपको कम्युनिकेशन का डिटेल यानी कि डेफिनेशन आपके चैप्टर में दी गई है. Check the chapter, take the help of the chapter and do all the questions likewise. Creative bag. Hots, you want to use your computer. Which means of communication will you use to do so? Subject enrichment. Look at the pictures and write the names below each picture. आपको सबकी photos आपके chapter में मिल जाएंगी. Write the names. Subject interlinking. Prepare your own newspaper. Use cutouts from the old newspaper or magazines and make a newspaper. Trying to cover a few topics like politics, sports, education, etc. with some advertisements too. Right? And while doing this activity, bachcho, have fun, enjoy.